गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने भी ताशकंद में ट्रैवल किया है। 3 डे विजिट है वहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की। तो ये जो है एनुअल समिट जो है आपकी अगले महीने होनी है, सितंबर 15 और 16 में सामरकंड में होगी जो समिट होगी। और ये इस टाइम जो समिट हो रही है डिफेंस मिनिस्टर्स की, उसमें इंडिया ने बोला है कि हम एससीओ के जो रैट्स है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं और हम ज़्यादा सिक्योरिटी रिलेटेड कोऑपरेशन करने को तैयार हैं। तो एनीवे हम देखते हैं कि एससीओ है क्या। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी बनाने के लिए यूरेशियन रीजन में इसको बनाया गया। 2001 में इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर, नाम इसका शंघाई से है लेकिन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में लोकेटेड है। जो एससीओ का चार्टर है वो 2002 में साइन किया गया और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो 2017 में इसके मेंबर बने हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो आपके गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये सोशल इश्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवरेज को बढ़ाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पर्सनस और सिटीजन्स को इसके बेनिफिट मिल सकें। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि जो अभी एनएफएसए के अंदर जो बेनिफिशरीज की पॉपुलेशन आइडेंटिफाई की गई है वो 2011 सेंसस के हिसाब से हुई है। लेकिन ऑफ कोर्स 2022 में वो 11 साल बाद वो पॉपुलेशन चेंज हो गई होगी, बढ़ गई होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसको रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बेनिफिट्स दो। उन्होंने इवन ये भी बोला कि जो राइट टू फूड है वो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन इससे बिल्कुल ऑपोजिट नीति आयोग ने प्रपोजल क्या दिया है कि जो नेशनल लेवल पर अर्बन और रूरल कवरेज जो हमारी एनएफएसए में है उसको 75-50 मतलब कि 75% ऑफ रूरल एरिया, रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन की बजाय 60% ऑफ रूरल पॉपुलेशन और 40% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को कवर करो नीति उसमें एनएफएसए में। और इसका मतलब लगभग 71.62 करोड़ बेनिफिशरीज रह जाएंगे एज अगेंस्ट 80 करोड़ के आसपास जो बेनिफिशरीज अभी एग्जिस्टिंग है। इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 47,000 करोड़ रुपीज बचा पाएगी, ऐसा नीति आयोग का कहना है। तो अब हम देखते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या। तो ऑफ कोर्स फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देने के लिए इसको 2013 में बनाया गया। एक लीगल राइट देता है एलिजिबल हाउस होल्ड को फॉर फूड। उनको 3 रुपये पर केजी, 2 रुपये पर केजी वीट, कोर्स ग्रेन 1 रुपये पर केजी मिलता है। और ये जो प्राइस है इसको हम सेंट्रल इशू प्राइजेस कहते हैं। 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। इसमें विमेन को इवन जो है प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को जो है मील्स भी दी जाती हैं या फिर उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स लगभग 6,000 रुपये तक के दिए जाते हैं। चिल्ड्रन जो है अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज है उनको न्यूट्रिशियस मील्स दी जाती हैं। अगर मील्स नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट किसी भी वजह से तो उनको उसकी बजाय फूड सिक्योरिटी अलाउंस देना पड़ता है। इसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मनुस्मृति। ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वाइस चांसलर जो है जेएनयू के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है मनुस्मृति को ऑन एन ओकेजन। और मनुस्मृति है क्या? एक संस्कृत टेक्स्ट है जो कि धर्मशास्त्र ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म को बिलोंग करता है। जनरली कहा जाता है कि 2nd सेंचुरी और 3rd सेंचुरी सीई के बीच में इसको लिखा गया है। एक मिथिकल फिगर मानी जाती है कि मनु, जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहले ह्यूमन थे इन हिंदुइज्म, उनको हम उन्होंने इस टेक्स्ट को लिखा है। अब ये बहुत ही बड़ा टेक्स्ट है, एनसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट है जिसमें सोशल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ दी गई हैं सारी कास्ट और इंडिविजुअल्स की। कैसे सोशल और सेक्सुअल रिलेशंस होने चाहिए मैन वेमेन के अमंग डिफरेंट कास्ट। टैक्सेस के बारे में बात की गई है, रूल फॉर किंगशिप के बारे में बात की गई है, कैसे मैरिटल हार्मनी को बना के रखा जा सकता है, एवरीडे डिस्प्यूट्स कैसे सेटल किए जाने चाहिए, लाइफ जो है रियलिटी में कैसे जी जानी चाहिए, ये जो है मनुस्मृति बता रही है। तो इसमें धर्म के बारे में भी बात की गई है। धर्म का मतलब इसमें है ड्यूटी, रिलीजन, लॉ और प्रैक्टिस। इवन अर्थशास्त्र जो कि स्टेट क्राफ्ट और लीगल प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में भी इसमें बात की गई है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये प्रीस्टली कास्ट के जो लोग थे वो अपने ब्राह्मण स्कॉलर्स जो थे, यंग ब्राह्मण स्कॉलर्स, उनको कॉलेजेस में उनको इस मनुस्मृति का टेक्स्ट पढ़ाते थे। तो एक तरह से ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी बन गया था ये टेक्स्ट ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन में। और ये वर्णाश्रम धर्म का जो है ये एक तरह से सेंटर पीस बन चुका है। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ना 4 मेजर डिविजन्स हैं। पहला डिवीजन है कि बताया गया जिसमें कि कैसे वर्ल्ड क्रिएट किया गया। दूसरा बताया गया कि सोर्सेज ऑफ धर्म क्या है। तीसरा है आपका जो है वो सोशल क्लासेस में बांटा गया धर्म को, जो आपका वर्ण सिस्टम है। चौथा है लॉ ऑफ कर्म, रीबर्थ और फाइनल लिबरेशन बताया गया है। तो जो इसमें 3rd सेक्शन है जिसमें आपके 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम बताया गया है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसलिए उसके ऊपर उसका क्रिटिसिज्म किया जाता है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, अब ये आपके पॉलिटी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स को जो है वो अमेंड कर दिया है और कहा है कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रेंट फ्री रह सकते हैं 6 महीने तक अपने रिटायरमेंट के बाद ऑफिशियल अकोमोडेशन में। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये नोटिफिकेशन निकाली है, कहा है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को 1 साल तक के लिए रिटायरमेंट के बाद एक ड्राइवर, एक सेक्रेटरी असिस्टेंट और राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी कवर मिलेगा। जो आपके एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से कर्टिसीज भी की जाएंगी, सेरेमोनियल कर्टिसीज की जाएंगी उनके लिए 1 साल तक ऑफ कोर्स। और ये जो है अभी रिसेंटली आपके जो है चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले ही इन रूल्स को अमेंड किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स। तो ये आपके जो है इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है उन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं फॉर नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2022। अब अगले महीने तक जो है ये एप्लीकेशंस ओपन है, लेकिन ये अवार्ड अनाउंस कब किए जाएंगे? 26 नवंबर, जो आपका नेशनल मिल्क डे होगा। तो इसमें ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी इसी टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम देखते हैं गोपाल रत्न अवार्ड्स क्या हैं। तो ये ऐसे हाईएस्ट नेशनल अवार्ड हैं इन द फील्ड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर, जो कि इंडिविजुअल्स और डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एनकरेज करने के लिए बनाए गए हैं। 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं: बेस्ट डेयरी फार्मर, बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, तीसरा है आपका बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? इसको गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस ब्रीड के लिए लॉन्च किया था। इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स इसके अंदर बनाए जा रहे हैं, ताकि लगभग 40% जो है हम इंडिजिनस ब्रीड्स को इंडिया में ब्रीड कर सकें। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट के ऊपर भी एक फोकस करता है। तो इंडिजिनस ब्रीड्स को कंजर्व करके करना, डेवलप करना, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ऑब्जेक्टिव है। तो स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है वो इंप्लीमेंट कर रही हैं इस प्रोग्राम को, और बहुत सारी और इंडिजिनस कैटल डेवलपमेंट एजेंसीज में जो काम करती हैं, जैसे एनजीओज, कुछ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वो भी इसमें पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज की तरह काम कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट्स। तो जो आपके सेक्रेटरी हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने बोला है कि कुछ टाइम के अंदर, इस साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत में, गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट्स शुरू कर देगी इशू करना, जिसमें एक ई चिप होगी और बहुत से अलग फीचर्स भी होंगे। एक जो आपकी पासपोर्ट बुक होगी उसके अंदर सिक्योरिटी अपग्रेडेशन की जाएगी। तो डायस्पोरा के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए ये इशू किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेशन की क्लियरेंसेज मिलती है कंट्री में, वो तेलंगाना स्टेट में मिलती है, और गवर्नमेंट जो है 15 और कंट्रीज़ के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंगुल। तो आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स ने कहा है पॉलिसी मेकर्स को कि जो आपका ओडिशा का अंगुल रीजन है, वहाँ पर आपको ग्रीन एनर्जी जो है वो लाने की ज़रूरत है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अंगुल है वो 12% ऑफ इंडिया और 56% ऑफ ओडिशा की कोल प्रोडक्शन को केटर करता है। छोटा सा रीजन है, लेकिन 12% ऑफ टोटल कोल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया और 56% ऑफ ओडिशा की कोल प्रोडक्शन को केटर कर रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि कोल प्रोडक्शन जो अंगुल में कुछ अगले 10 साल के अंदर जो है वो 3 गुना और बढ़ जाएगी, और ये रीजन जो है लगभग 1,68,000 के आसपास जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Shanghai Cooperation Organization. So this topic is important for your international relations. So Defense Minister Rajnath Singh ji has recently traveled to Tashkent on a 3-day visit for the Defense Ministerial Conclave of the Shanghai Cooperation Organization. He's participating in this conclave just ahead of the annual summit of SCO, which is going to happen on September 15 to 16 in Samarkand, and he has shown interest in cooperating with SCO and its regional anti-terrorism structure also. So anyways, what is SCO? So SCO is a permanent intergovernmental international organization. It aims to maintain peace, security and stability in the Eurasian region. So it was created in 2001, and its headquarters, unlike its name, Shanghai Cooperation Organization, its headquarters is located in Beijing, that is in China, and its charter was signed in 2002, and India and Pakistan became members of SCO in 2017. The next topic is National Food Security Act. So this topic is important for your governance section, also your social issues. So Supreme Court has directed the central government to increase the coverage of beneficiaries under the National Food Security Act, so that more and more needy persons and citizens can get the benefit of this scheme. So why the Supreme Court has said this? Because the current figures or the current beneficiaries are
decided by the population figures of 2011 census, but now we are in 2022. So after 11 years, we have not conducted the 2021 census as of yet. So that's why it is important to update our number of beneficiaries, so that more and more people can get benefits of this scheme. So it has also said that the right to food is a fundamental right which is available under the Article 21 of the Constitution. But opposite to this suggestion, the Niti Aayog had made the proposal that currently, National Food Security Act is entitles 75% of the rural population and 60% of the, 50% of the urban population for the national food security benefits. But now the Niti Aayog has said that instead of this 75-50 ratio, we should go for 60-40, which means 60% of the rural population must be covered and 40% of the urban population must be covered under this scheme. And if this is done, then the beneficiaries would drop to 71.62 crore. Currently, about 80 crore people are entitled for the benefits. And if this is done, then the central government would be able to save about 47,000 crore rupees as per this estimate. So, anyways, what is the National Food Security Act? Of course, it was notified in 2013 to provide food and nutritional security, and it gives a legal right to the eligible households, and they can get this food grains at subsidized price. Rice is given at 3 rupees per kg, wheat is given at 2 rupees per kg, and coarse grain is given at 1 rupee per kg under the TPDS. These prices, 3 rupees, 4 rupees, 2 rupees, 1 rupees are called the central issue prices, and it covers up to 75% of the rural population and up to 50% of the urban population. So also the women who are pregnant and who are lactating mothers, they are eligible to for the entitlement of maternity and benefits of not less than 6,000 rupees. Even the children up to 16 years of age are entitled to get nutritious meals. In case the government is unable to supply the food, grains or meals, then the beneficiaries would be given the food security allowance. For that, the grievance redressal mechanism at district and state levels has also been, the provisions for that has also been made in this act. So the next topic is Manusmriti. So this topic is important for your art and culture section. So Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University has recently criticized the Manusmriti in a lecture series organized by Union Ministry of Social Justice and Empowerment. So she has said that so basically she has criticized it. But anyway, what is this Manusmriti? So it's a Sanskrit text which belongs to the Dharmashastra literary tradition of Hinduism. It is attributed to the mythical figure of Manu, who was considered as the ancestor of human race in Hinduism. It is said to be composed between 2nd century BC and 3rd century CE. So what is this text about? So it is a very comprehensive text. It is encyclopedic in nature. It covers subjects like social obligations and duties of various castes and individuals, the social and sexual relations of men and women among different castes, taxes, what should be the rules of kingship, how to maintain marital harmony, and the procedures for settling even everyday disputes. It also talks about the life and how it should be lived in reality. It also talks about dharma, which means duty, religion, law, and practice, and it also discusses aspects of Arthashastra, which is statecraft and legal procedures. So basically, it was meant to be read by the priestly caste, and it was a part of the curriculum for the young Brahmin scholars who were studying at the colleges. So its significance is evident that it was the standard source of authority in the Orthodox tradition. People who the ruling class or the priestly class used to read it for deriving, or it was an authoritative text for them. So why is it controversial? Basically, it has 4 major divisions. First talks about the creation, how the world was created. The second talks about the sources of dharma. Third, it talks about the 4 social classes, that is the fourfold Varna system. So this third section is the most controversial because it talks about the caste system. So the next topic is Supreme Court Judges, Salaries and Conditions of Service Act. So this topic is important for your polity section. So Government of India has recently amended the Supreme Court Judges rules, and now the retired Chief Justice of India will be entitled for
official accommodation for 6 months from the date of his or her retirement. Ministry of Law and Justice has said that even the retired Chief Justice and judges of the Supreme Court will be entitled for a driver or a chauffeur, a secretarial assistant, and round the clock security cover for a period of 1 year from the date of their retirement. And a retired Chief Justice and judges should also be extended as per the protocol courtesies which are given to the ministers or judges at the airports. The next topic is National Gopal Ratna Awards. So, Ministry of Fisheries has recently invited applications for the National Gopal Ratna Awards 2022. So this topic is also important for your economy section and for your governance section also. So, the last date for submission of these applications is 15th of September, and the awards will be announced on National Milk Day, that is on the 26th of November. So, while we're discussing it is important to discuss this Rashtriya Gokul Mission also. But first, let us see what is Gopal Ratna Awards. So these are one of the highest national awards in the field of livestock and dairy sector, and the aim is to encourage individuals and dairy cooperative societies. For them, three awards in three categories are given. First is of course the best dairy farmer. Second is best artificial insemination technician. Third is the best dairy cooperative or milk producer company. So what is Rashtriya Gokul Mission? So it was launched by the government for conservation and development of indigenous breeds. And the aim is to develop Gokul Grams so that indigenous breeds up to 40% of nondescript breeds can also be developed so these Gokul Grams will be the integrated cattle development centers. So the mission is to develop and conserve the indigenous breeds, and the mission is being implemented through the state implementing agencies, and even the agencies like the NGOs, universities, colleges, which are having any role in indigenous cattle development, they are also accommodated as participating agencies. So the next topic is electronic passport. So this topic is important for a governance section. So recently, the Secretary of Ministry of External Affairs has said that the government will roll out electronic passports by the end of this year or by early next year, and an e-chip and a few more features will be added to the passport book so that security upgradation of the passport can be enabled. He has also said that maximum number of immigration clearances are given by the state of Telangana, and the government is also in process to identify and signing migration and mobility agreements with 15 more countries. So the next topic is Angul. So this topic is important for our economy section. So recently, researchers have urged policymakers to switch to green energy and economy in Odisha's Angul region. So you know that Angul region accounts for 12% of India's total coal production and about 56% of Odisha's coal production. So the coal production in Angul is expected to increase by 3 times in the next 10 years, and it will reach about 300 million metric tons by 2033, and it will be able to give direct employment to about 168,000 people, and almost 70% of them would be informal sector employment. So these were our topics for today. Please download the weekly current affairs compilations from our group also today, and we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.